ओके, तो हम लोगों ने दो तीन चीजें सीख ली। एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं, और दूसरा जनरेटिंग सेट क्या होते हैं। ये हमने लास्ट क्लासेस में सीखा। आज हम बात करेंगे बेसिस, और बेसिस के बाद हम वेक्टर स्पेस की डायमेंशन की बात करेंगे। बेसिकली जो एलिमेंट होते हैं बेसिस के, वही हमारी डायमेंशन कहलाती है वेक्टर स्पेस की, है ना। तो लेट्स डिफाइन द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। बेसिस क्या होता है? Some elements basis of a vector space. So if we taking V is a vector space, let capital V be a vector space, okay, over a field F. So I'm just taking set of vectors V1, V2, and Vn. A set of vectors V1, V2, V3 up to Vn belonging to capital V is called basis V if पहली बात तो ये एलआई वेक्टर्स होना चाहिए, और दूसरा ये जनरेटिंग वेक्टर्स होना चाहिए। जनरेटिंग सेट बनाए, जनरेटिंग सेट इन द सेंस कि इन सारे एलिमेंट्स से जो वी के वेक्टर्स हैं, वी के एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं। तो नंबर वन, वी एन वी टू आर द एलआई वेक्टर्स और एलआई वेक्टर्स, एंड सेकेंडली कि सारे के सारे वेक्टर्स जनरेट करें। जनरेट मतलब स्पैन करें, स्पैनिंग सेट है ना। वी वन वी टू वी वन स्पैन वी को स्पैन करें, मतलब वी के सारे वेक्टर्स को जनरेट करते हैं। तो ऐसे हमारे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स इज कॉल्ड अ बेसिस। ओके, एक चीज ध्यान दीजिए, जब जो भी वेक्टर एलआई हो, साथ साथ में सारे वेक्टर्स को स्पैनिंग सेट बने या फिर जनरेटिंग सेट बने, तो वो हमारे पास बेसिस हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि बेसिस एक यूनिक वेक्टर यूनिक सेट हो। इट में बी डिफरेंट, है ना। बेसिस में भी डिफरेंट, कोई भी एलआई वेक्टर जो जनरेटिंग सेट हो, वो तुम्हारे पास बेसिस बना देगा। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट अ रिमार्क कि हमारा जो बेसिस होता है वो यूनिक नहीं होता। तो बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। अब देखिएगा, जैसे कि हमने लिया आर ओवर आर, ये हमने एक वेक्टर स्पेस ले लिया। तो इसका हर एक एलिमेंट, आर का हर एक एलिमेंट कैन बी जनरेटेड बाय वन। अगर हम यहाँ पर एक सेट ले लें, केवल वन एलिमेंट ले लें, और वन, ऑब्वियसली बात है, इट इज एलआई सेट, है ना। अब देखते हैं कि अगर हमने हमने कहा कि अल्फा इज ए स्केलर विच इज बिलोंगिंग टू आर, so if you can say this is alpha into 1, and you will get this is alpha from here, this vector space, and this will be belonging to R. It means that कि हर एक एलिमेंट जो कि अल्फा रियल नंबर का है,
दैट विल बी द जनरेटेड बाय दिस वन, है ना। तो वो हर एक एलिमेंट हमारे पास मिल जाएगा, इसलिए दिस इज द जनरेटिंग सेट, दिस इम्प्लाइज दिस वन when r, है ना, over r you can see. So this implies this one is a wave. अगर वन की जगह हम टू ले लें, then also will be a basis and then also generates, वो भी हमारे पास जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास, अगर हम यहाँ पर c ले लें, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग c ओवर r, तो इसकी जो एलिमेंट है, इसको हमारे पास यू नो दैट एनी एलिमेंट ऑफ द टाइप एक्स प्लस आयोटा टाइप का होता है। तो इसको जनरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक वन चाहिए और साथ में आयोटा चाहिए, तभी जनरेट हो पाएगा, है ना। तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, एक्स इंटू वन एन प्लस का वाई इंटू आयोटा, है ना। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई फ्रॉम आर है, फ्रॉम द स्केलर, एंड ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल बी बिलोंगिंग टू सी। तो इसके में यहाँ पर दो एलिमेंट्स है, और ये हमारे पास एल सेट है एंड जनरेटिंग सेट है। तो हमारे पास बेसिस क्या होगी, बेसिस इज जस्ट नथिंग, दिस इज योर वन कमा आयोटा, है ना। तो वन कमा आयोटा से ही सारे एलिमेंट उस सेट के जनरेट हो रहे हैं, सारे एलिमेंट्स हम पा जा रहे हैं। तो हमें सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल हम बेसिस एलिमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस एंड सम एग्जांपल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखते हैं कि मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या होता है ना। समझ में आ रही चीजें, ज्योति, आर यू इन क्लास? मिनिमल जनरेटिंग सेट, ओके। तो व्हाट इज द मिनिमल जनरेटिंग सेट? एक जनरेटिंग सेट हो और उससे छोटा कोई हमारे पास जनरेटिंग सेट ना बने, है ना। मिनिमल जनरेटिंग सेट, तो a subset S of a vector space is said to be minimal generating set if number one, that is equals to S is a generating set of V, और इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जनरेटिंग सेट ना बने, तब उसे हम मिनिमल कह पाएंगे। मतलब जनरेटिंग सेट हो और सबसे छोटा हो, इससे छोटा कोई हमारे पास सेट ऐसा ना हो जो कि जनरेट करता हो V को, है ना। तो a subset S of a vector space V is said to be minimal generating set if S is generating set of V and it is a smallest one, है ना। तो any, it means any proper subset of it is not a generating set of S cannot generate V, क्लियर। तो इसको हम मिनिमल जनरेटिंग सेट कहते हैं। डिफिनीशन और लिखेंगे, मैक्सिमल लीनियरली डिपेंडेंट सेट क्या होता है कि हमारे पास एक एलआई सेट हो जिसका कोई भी सुपर सेट हमारे पास एलआई ना बने, है ना। तो उसको हम मिनिमल एलआई सेट बोलते हैं। तो लेट अस राइट द मैक्सिमल एलआई सेट बोलते हैं।
मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट से। ये डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी इसलिए इनको लिखा रहे हैं, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट से। A subset, a subset S of a vector space V is said to be maximal Li set if, पहले बात तो Li होना चाहिए, S is linearly independent। नंबर दो, नो प्रॉपर सबसेट, सॉरी, नो प्रॉपर सुपर सेट, मतलब इससे बड़ा कोई सेट हमारे पास Li तभी इसको मैक्सिमल कह पाएंगे। तो नो प्रॉपर सुपर सेट ऑफ S linearly independent set। यू कैन सी कि इस तरीके से कह सकते हो कि इफ आई एम जस्ट सेइंग कि S, if S is the proper subset of H dash, it means S dash is the proper superset, then this S dash must not be linearly independent। Okay, so this is the maximal linearly independent set, है ना? A subset S of a vector space V is said to be maximal Li set if S is linearly independent and no proper superset of S is linearly independent। Clear? तो दिस इज द मैक्सिमल Li सेट और दूसरा मिनिमल जनरेटिंग सेट। ये दो डेफिनेशन आपको दिमाग में रखनी है। आइए अब कुछ रिजल्ट सब लोग करते हैं। पहला रिजल्ट है a set of vectors v1 v2 up to vn belonging to V is a basis ऑब्वियस सी बात है, बेसिस है तो ये सारे के सारे जनरेटिंग सेट है, जनरेटिंग एलिमेंट है। मतलब जनरेट करते हैं वी को, तो जनरेट करेंगे तो एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी रिटन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स v1 v2 and vn, and that linear combination must be unique if the v1 v2 and vn are basis element। तो अगर बेसिस के एलिमेंट है तो उससे जब हमारे पास एलिमेंट जनरेट होता है तो वो यूनिकली जनरेट होता है, मतलब उसको हम उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो यूनिक होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिक। हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर बेसिस एलिमेंट्स को लेते हैं और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो स्केलर्स मिलेंगे वो यूनिकली मिलेंगे। दो तरीके से हम उसको कभी भी नहीं लिख सकते, है ना? तो अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 and vn which is belonging to V is a basis of V if and only if and only if each element
each element of V can be uniquely expressed as a linear combination of the vectors v1 v2 up to vn। ठीक है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन थ्योरम भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आल्सो रिस्ट्रिक्शन थ्योरम। ओके, तो यूनिकली रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिस एलिमेंट का जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, इफ दिस एस some vectors v1 v2 up to vn spans a vector space vf। okay, so if S is a v1 v2 and vn spans a vector space vf, then there exists a subset of S which is a basis। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्पैन करा तो इसका जो सबसेट दैट दैट इज स्पैनिंग सेट है ना। तो इसी से हमारे पास जो अभी हमने डेफिनेशन यूज की थी ना कि मिनिमल स्पैनिंग सेट है ना, मिनिमल जनरेटिंग सेट। तो हमारे पास ये जो जनरेटिंग सेट है, अगर इसका हम मिनिमल जनरेटिंग सेट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी मेक द बेसिस, वही हमारे पास बेसिस हो जाएगी। तो मिनिमल जनरेटिंग सेट जो बनेगा डेफिनेटली दैट सेट विल बी द एलआई सेट। ठीक है, तो यू कैन से नंबर थर्ड रिजल्ट, a minimal generating set is always a basis in a finitely generated vector space। ओके, तो अगर मिनिमल जनरेटिंग सेट है तो डेफिनेटली वो बेसिस बनाएगा। तो अगर हमारे पास एक सेट है जो कि जनरेटिंग सेट है, तो उसका जो सबसेट होगा डेफिनेटली देयर विल एग्जिस्ट अ सबसेट दैट विल बी अ बेसिस ऑफ दिस। सिमिलरली अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें कि मैक्सिमल एलाइ सेट, linearly independent is always a basis in a finitely generated vector space। Finitely generated vector space।
ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। अगर मैक्सिमल एलआई हमको सेट मिल जाता है, दैट विल बी द बेसिस ऑफ द फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर। तो ये दो जो रिजल्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमको अगर कोई जनरेटिंग सेट दिया हुआ है, कोई भी सेट दिया हुआ है, दैट इज अ जनरेट, अगर उसको हम मिनिमल जनरेटिंग सेट बना लेते हैं, दैट विल बी द बेसिस। इसी तरीके अगर कुछ एलआई सेट दिए हुए हैं, उनका जो मैक्सिमल, लेकिन अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं मैक्सिमल एलाई सेट्स के ऊपर, मतलब मैक्सिमली लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, उसके बाद कोई भी हमारे पास कलेक्शन जो है वो एलाई नहीं रह जाता। ठीक है, तो वो हमारे पास दैट विल बी द बेसिस ऑफ दैट वेक्टर। फिफ्थ रिजल्ट, इफ एस इज इक्वल्स टू u1 u2 un, ठीक है, spans the vector space then any n plus one vectors are linearly dependent। तो कह रहे हैं कि अगर u1 u2 अप टू un स्पैन द वेक्टर स्पेस हुई है, जो एक स्पैनिंग सेट है, तो अगर हम यहाँ पर कितने हैं n वेक्टर्स, तो उससे अगर n प्लस वन वेक्टर्स हम लेंगे इन v, तो हम हमेशा एल डी वेक्टर्स होंगे, ऑलवेज विल बी द लिनियरली डिपेंडेंट, अगर हम n प्लस वन वेक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, तो एनी n प्लस वन वेक्टर, तो जितनी हमारे पास स्पैनिंग सेट अगर कोई है जो स्पैन कर दे रहा है, तो उससे अगर ज्यादा हम वेक्टर्स लेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि इसको रिड्यूस करके हम बेसिस बनाते हैं, और बेसिस से ज्यादा अगर हम बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं उससे ज्यादा एलिमेंट्स अगर हम लेते हैं, तो डेफिनेटली वो एलडी वेक्टर बनाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ये स्पैनिंग सेट है, तो यू यू ऑलवेज विल बी द, यू कैन से कि n प्लस वन वेक्टर्स, अगर कोई भी हमको n प्लस वन वेक्टर्स मिलते हैं तो हमेशा वो एलडी होंगे, वो हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो यू कैन राइट इन द बेसिस फॉर्म, कि अगर बेसिस के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो बेसिस एलिमेंट को ही डायमेंशन बोलते हैं, तो इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, इन अदर वर्ड सेट containing a set containing more vectors than dimension। ठीक है, in words, a set containing more vectors than dimension is always linearly dependent। okay, if v is finitely generated vector space,
If V is a finitely generated vector space, then any same number of elements. तो अगर हमारे पास दो बेसिस हैं, तो हमने देखा था कि यूनिक बेसिस तो होती नहीं है ना, तो एक से ज्यादा अगर बेसिस हैं लेकिन उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है, तो इफ V the finitely generated vector space, then any two bases of V have same number of elements, उनके अंदर number of element will be the same. तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होती है उसके ऊपर देखते हैं, डिफाइन कर लेते हैं डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन, तो अभी हमने बात करी ना, एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिस, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, क्योंकि वो हमारे पास हर एक बेसिस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम ही है। डायमेंशन ऑफ, तो डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस, एनी बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस if dimension of V is equals to n, then V is called n dimensional vector space. A vector space of finite dimension is called finite vector space. Called finite dimensional finite dimensional vector space. Okay, so this is a dimension of a vector space. What? The number of elements of a basis.
है ना, उसको हम डायमेंशन बोलते हैं वेक्टर स्पेस। अगर वो फाइनाइट है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस इज फाइनाइट, तो उस वेक्टर स्पेस को हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अदरवाइज दैट कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके। तो के ऊपर जो रिजल्ट है उसको नेक्स्ट भी 7 मिनट है, फटाफट लिख लेते हैं रिजल्ट, थोड़ा फास्टली लिखेंगे। तो रिजल्ट नंबर 7 लिखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द बेस डायमेंशन। तो इफ डायमेंशन ऑफ एस v is just equal to n and this capital S have the elements, this is v1 v2 up to vn, और ये li एक सेट है जो कि li है, और साथ में हमारे पास उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, और डायमेंशन वेक्टर स्पेस की वी एन है, और n एलिमेंट्स का कोई अगर हम li सेट लेते हैं तो वो 100% बेसिस बनाएंगे, दैट इज अ सबसेट ऑफ v, then vs is a basis। इट मीन जितना वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है उतने अगर हम एलाई वेक्टर्स ले लेते हैं तो वो एक बेसिस बनाएंगे, या यू कैन से लाइक दिस, एलाई सेट, एलाई सेट ऑफ एन वेक्टर्स, वेक्टर्स इन अ n dimensional n dimensional vector space is always a base, is always a बेसिक, है ना। तो अगर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में n वेक्टर्स, कोई भी एलाई n वेक्टर्स ले लो, तो 100% वो बेसिस बनाते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द जनरेटिंग सेट। इफ डायमेंशन ऑफ v इज जस्ट इक्वल टू n, और हमने एक s सेट लिया जो कि जनरेटिंग सेट बना रहा है, दैट इज योर v1 v2 अप टू, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, जनरेट्स v, then this s is a basis of v, ये v की क्या बनेगी, बेसिस। और वी कैन से अ जनरेटिंग सेट, a generating set n vector of n vector in a n dimensional vector space is a base। ओके। तो ninth result, let us write कि in a finite dimensional vector space space we have, हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ एलाई वेक्टर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any li vectors, li set is less than number of elements basis less or equal to number of elements in any basis
and that will be less or equal to number of elements in any generating set. इट मीन दैट कि हमारे पास अगर एक सेट है जो कि जिसके अंदर उसकी बेसिस से कम एलिमेंट्स हैं, तो कभी भी वो जनरेटिंग सेट नहीं बनेगी। और एक एलाई सेट है जो जिसके अंदर बेसिस से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो कभी भी एलाई सेट नहीं होगा, या कह सकते हो जनरेटिंग सेट नहीं होगा, वो बेसिस नहीं बनाएगा। ठीक है। we have 2 minutes, so we can tenth result. Let us write the tenth result. So let B be a vector space of dimension n, and this S is a non-empty subset of V. Then number one first है कि if this cardinality of S is greater than n, then S definitely will be a LD. Then S is LD set, है ना, क्योंकि वो फिर and S may or may not be generated. S may not generate. Second, that is your, if this cardinality of this set S is less than n, then S cannot generate V, and Li may or may not. Hello. थर्ड, अगर हमारे पास if cardinality is not